Assalamualaikum. आज हम पढ़ेंगे about how a feather is linked to electricity and how a single feather changed the course of history. So in this video we're going to learn about class prejudice, true father of electricity, and electrifying hot pokers, live chickens, and flying children. So let's get started with the video. 1729 में there was this guy named Stephen Gray. Stephen Gray जो था ना बहुत गरीब सा आदमी था. उसकी फैमिली कपड़े बेचकर, कपड़ों को डाई करके, इस तरह के कैसे काम करके ना पैसे कमाते थे और बहुत कम होते थे. He was never rich और वो इतना पुअर था कि he could never own a self portrait of himself, and we till this day do not have a single photo of Stephen Gray. And अब जितना भी वो गरीब हो जाए, जितना उसके पास कम पैसा हो जाए, he knew that he loves science and he was like, I need to learn science, I will die without science and everything. So he's like, अच्छा मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, चलो ऐसा कहते हैं, I'm gonna self fund myself to like do research and everything. और उसने अपने आप को सेल्फ फंड किया. $1 उसने साइड पे रख दिया कि मैं इस काम के लिए ये बुक खरीदूंगा, मुझे इतने डॉलर चाहिए. तो he's like, I'm gonna do this. और उसने ना टेलीस्कोप्स के ऊपर रिसर्च की, माइक्रोस्कोप्स के ऊपर रिसर्च की, एंड ही इवन ट्राइड टू कैप्चर अ घोस्ट फ्रॉम हिज साइंटिफिक नॉलेज. I don't know how that turned out, but yeah. So what happened was Stephen Gray was friends with John Flamsteed. He was a rich guy, literally super rich, and he had a painting of himself. So score. अच्छा, John Flamsteed जो था ना वो he was a royal astronomer. Astronomers रॉयल सोसाइटी में ना एक ओहदा सा था, एक पोजीशन थी कि रॉयल एस्ट्रोनॉमर कहते थे, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय द किंग चार्ल्स II, व्हिच वी whom we learned about in the last video. So yeah, and what happened was John Flamsteed जो था ना रॉयल एस्ट्रोनॉमर था इन द रॉयल सोसाइटी. पर रॉयल सोसाइटी का जो हेड था, याद है वो प्रेसिडेंट कौन बनाता है? प्रेसिडेंट वाज न्यूटन. न्यूटन को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था. और न्यूटन और कहते फ्लैमस्टीड का ना झगड़ा हो गया. जब झगड़ा हुआ ना, और वो बात किस बात पे हुआ कि न्यूटन ने कहा मेरे स्टार मैप्स ज़्यादा प्रिसाइज हैं, और फ्लैमस्टीड ने कहा नहीं तुम्हारे गलत है, मेरे ठीक. तो इसके ऊपर ना न्यूटन ने कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगे, फ्लैमस्टीड ने कहा मैं नहीं मानूंगा. तो उसने कहा बस बेटा आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास कितनी पावर है. न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ना इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया फ्लैमस्टीड को. फ्लैमस्टीड को जब न्यूटन ने ब्लैक लिस्ट किया ना, तो उस न्यूटन ने कहा कि फ्लैमस्टीड का जो भी कोई दोस्त होगा ना उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दो, कि फ्लैमस्टीड का जो भी दोस्त है वो मेरा दुश्मन है. उसने हर एक इंसान को, फ्लैमस्टीड से कनेक्टेड इंसान को दुश्मन बना के ब्लैक लिस्ट करवा दिया, और रॉयल सोसाइटी में वो आ ही नहीं सकते थे. वो चाहे जितना भी कहते हैं काम कर ले, वो पब्लिश नहीं हो सकते थे उसके फ्लैमस्टीड के आसपास के लोग. और वो मतलब अपनी ज़िंदगी लगा दें साइंस के ऊपर, पर न्यूटन की वजह से वो लोग कभी भी मेन स्ट्रीम पे नहीं आ सकते थे. तो फ्लैमस्टीड का दोस्त कौन था? स्टीवन ग्रे, पहले से गरीब इंसान. अब वो पहले से गरीब इंसान जब न्यूटन से उसकी कहते हैं आमने सामने हो गया, वो तो और गरीब होता चला गया. तो उसका जो फैमिली का मैंने बिजनेस बताया था, was about dyeing clothes and everything, and it was a dangerous work to do. And Gray wanted to do was to study science, and he could not because of Newton. Or Newton, he was like, I do not care about you or your feelings. So he could never get published, and he hated this work. So he's like, what am I gonna do myself? Should I just kill myself? So yeah. पर हुआ ये कि in 1713 his finances got better. उसके finances क्यों बेहतर हुए? Because Hawksby died. Hawksby जब मरा ना, तो Newton decided to hire a new assistant whose name was John Desailliers, and it's not Lurch because he's French. So yeah, so he was like, are you kidding me, Newton, are you all right? He was like, you cannot be this mean to people and you cannot destroy people's life. So he was like, he came in, और उसने ना सारे न्यूटन के एनिमीज को भी संभाल लिया और न्यूटन को भी संभाल लिया. उसने कहा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, ये बहुत जुल्म है लोगों के ऊपर. तो उसने जब ये किया ना, उसने मैनेज किया न्यूटन को, न्यूटन के एनिमीज और न्यूटन को. तो उसमें ना जब एनिमीज की बात आती है ना, तो हमारा एनिमीज में कौन था? एनिमीज में हमारे पास स्टीवन ग्रे था. 1719 में ना स्टीवन ग्रे 54 years old हो गया था. His life was not lifing, and
he was really upset with his life and everything. He thought he was a failure, and he was like, I cannot like do anything with my life. पर 1719 में ना जब कहते हैं जॉन डिसॉल ये आया ना, ही वाज लाइक कि यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा करते हैं हाँ तुम्हें ना एक चार्टर हाउस में जगह दिलाते हैं. चार्टर हाउस वाज अ रिटायरमेंट होम फॉर पुअर सोल्जर्स. तो ग्रे वॉज नेवर अ सोल्जर, बट वट ही सैड वॉज कि यार मैंने जो अपना स्टार मैप्स के ऊपर काम किया है ना, वो गवर्नमेंट के लिए काम किया है. दैट्स वाई आई एम अ सोल्जर, एंड यू शुड गिव मी अ प्लेस इन द चार्टर हाउस. एंड इवेंचुअली गॉट अ प्लेस इन द चार्टर हाउस. और अब चार्टर हाउस में वो बस रहता है, एंड लाइक ही इज़ लिविंग अ लाइफ, एंड ही completely focuses on science, बिकॉज पहले तो उसके पास कहते हैं पहले तो उसके पास पैसे नहीं होते थे कि ही वुड लाइक फोकस ऑन साइंस. पर अब उसके पास चार्टर हाउस में एक ऐसा जगह है जहाँ पर उसको खाने की भी परवाह नहीं करनी, उसे पीने की भी परवाह नहीं करनी, उसे रहने रात को सोने के लिए बिस्तर की परवाह नहीं करनी पड़ी. तो उसने कहा यार दिस इज़ माई बेस्ट शॉट at learning science, because he was obsessed with science. He was like, I need science in my life. So he's like, अच्छा ठीक है, I will learn science at the charter house. और वो साइंस जब पढ़ रहा होता था ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि ऑन May 1st 1729 उसने ना एक कहते स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना, मतलब अच्छी खासी, इतनी हाइप नहीं थी पर अच्छी खासी हाइप थी. तो उसने क्या किया, एक रॉड ली और उसने कहा कि इसके अंदर ना डस्ट पार्टिकल्स ना जाए ना, तो उसने यहाँ दोनों तरफ ना कॉर्क्स लगा दी. उसने जब कॉर्क्स लगाई ना ताकि डस्ट अंदर इस रॉड के अंदर ना जा पाए, तो उसने जब इस रॉड को रब किया और इसने कहते हैं फेदर को उछाल रहा था, किया रहा था वगैरह वगैरह, उसने सिर्फ रॉड को रब किया, पर ये फेदर उड़ते उड़ते ना कॉर्क पे जाके बैठ, कॉर्क से अट्रैक्ट हो गया. और ग्रे वॉज लाइक, आई नेवर चार्ज अप द कॉर्क. उसने कहा मैंने तो सिर्फ रॉड को कहते हैं रॉड को कपड़े से रगड़ा था, तो ये कॉर्क भी चार्ज हो गई है. So he found out about electrical communication, that electrons can travel. He was like, wow, this is something new and this is revolutionary. And he was like, अच्छा अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी दूर तक कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. कहते हैं कितनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है. उसने पहले लिया एक ये रॉड सी, एक उसने डंडा सा लिया और यहाँ पर ना उसने कहते हैं एक वायर लगाई और यहाँ पर एक बॉल रख लिया. ठीक है, कोई एल्यूमिनियम का बॉल सोच लो. ठीक है, तो उसने यहाँ पर जब बॉल रखी ना, उसने यहाँ पर रब किया, और जब रब किया ना, और तो यहाँ पर फेदर्स अट्रैक्ट हो रहे थे. और जब ये बॉल या फिर कोई भी चीज़ इनमें से ना ग्राउंड को टच करती ना, तो ये इफेक्ट ख़त्म हो जाता. तो ही वाज लाइक, अच्छा अब मैं कितना और दूर लेकर जा सकता हूँ कि कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की एक लिमिट होगी शायद, कि कितनी दूर मैं लेकर जाऊं तो वो ख़त्म हो जाएगी. तो वो चढ़ा चार्टर हाउस के सबसे बड़े टावर पे. यहाँ पर वो चढ़ा, उसने यहाँ पर एक रॉड ली और एक वायर नीचे फेंकी और यहाँ पर एक बॉल लगा दी. अब उसने इस रॉड को चार्ज किया और इसकी जो वायर थी ना और जो इसकी बॉल थी ना, उसने लिटिल पीसेस ऑफ फेदर को अट्रैक्ट किया इस जगह पर. इधर से उसने चार्ज किया और इधर फेदर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो अब उसने कहा यार ये तो मैंने इतनी ऊंची जगह से मैंने काम कर लिया है, इतनी ऊंची जगह से मैंने अट्रैक्ट कर लिया है, फ्रॉम 34 फीट अवे से मैंने अट्रैक्ट कर दी. अब मुझे एक नया टावर चाहिए जो इससे भी बड़ा होना चाहिए. And luckily for him, he had a wealthy friend who was Granville Wheeler. अब Wheeler जो था ना, he was extremely rich. So what he did was, he was like, I have this huge hall, and this hallway is like literally bigger than 34 feet. And what we can do is we're gonna like pass a path thread, और हम ना कहते हैं एक सिल्क वायर को ना, सिल्क स्ट्रिंग को हम कहते हैं पूरे अपने हॉलवे में लपटाएंगे इसके ऊपर ताकि सपोर्ट मिल जाए. और फिर हम क्या करेंगे कि हम ना दूसरी तरफ बॉल को फेदर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें. तो उन्होंने बाय रबिंग दिस रॉड दे अट्रैक्टेड अ feather that was 765 feet away. That's crazy. Like, I don't know how many 6 feet balls does that take.
like that's crazy, that's absolutely insane कि मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, मुझे इफेक्ट मुझे मिल रहा है कोई 765 feet away. And because the silk thread would like usually break क्योंकि इतनी पतली सी होती है, they became frustrated. They became frustrated and they replaced it with a metal wire. It was stronger but it did not work. But उनको इस बात से पता चला कि thickness कि not only does the thickness matter पर material also matters, क्योंकि उन्होंने पहले silk से कर रहे थे, it would work, but when they used a metal wire, the wire did not attract feathers that were far apart. अच्छा, तो अब बात आती है कि उसने जब कहते हैं मटेरियल के बारे में सोचा ना कि मटेरियल कौन सा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाएगा, तो उसके ध्यान में दो चीज़ें आई, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स आर दोज हु मूव इलेक्ट्रिसिटी ईजिली एंड इंसुलेटर्स दैट डज नॉट मूव एनी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली. अब उसने क्या किया, on 5th of August, which is apparently my birthday as well, but on 5th of August 1729, what Gray did was कि उसका एक छोटा सा सेटअप बना हुआ होता था इसके ना पास, तो उसने कहा कि अच्छा चलो, उसने ना गलती से रॉड को पहले चार्ज कर लिया और उसने बाद में कहते हैं सोचा कि यार मैंने पहले चार्ज कर दिया विदाउट अटैचिंग इट टू द wire and everything, and he was like okay, it's okay, I'm just gonna put the rod back into its place. पर जब वो rod wire के करीब लाया ना, these feathers over here started to attract to the ball. They got attracted by the ball and he was like, excuse me, what? I discovered electrical communication, but what's happening? Can you explain a little bit? So he found out that charges can actually move without the tube or the rod touching the thread, and he became crazy and he was like, damn, this is good news. And then he was like, what is this happening? He was like, electricity is being induced, और induced होता है मतलब influence करना, इस तरह का मतलब होता है. So he's like, electricity is being induced by the rod to the wire. So he called this process induction, charging without touching. Gray and Wheeler spent next 30 months electrifying umbrellas, hot walkers, and tablecloth. They were like going all over the place, like literally electrifying anything they could find and could get their hands on. So in 1713, what happened was कि उन्होंने ना एक लड़के को सिल्क थ्रेड्स की मदद से ना उन्होंने इसको लटकाया, और एक बंदा ना एक रॉड को चार्ज करता था, और वो रॉड को जब चार्ज करता था ना तो वो उस बंदे लड़के की ना बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते थे. और इस लड़के ने ना यहाँ पर एक वो पकड़ा हुआ है, बॉल पकड़ी हुई है, और यहाँ पर नीचे फेदर्स पड़े हुए. जब वो बंदा चार्ज करके रॉड इसके ऊपर लाता था और इसके ऊपर आता और इसके ऊपर लगाता था ना इस रॉड को, तो ये इस लड़के के पास ना एक एक्सेस ऑफ चार्ज इकट्ठा हो जाता था, और नीचे सारे फेदर्स ना अट्रैक्ट होकर ऊपर आना शुरू कर देते थे. अच्छा, अब ग्रे के फॉर्चून ना बढ़ना शुरू तब हुआ when his friend Cromwell, I don't know if I'm pronouncing it right, I think not, was made the editor of the Royal Society. और उसकी कहते हैं मैगज़ीन जो होती थी ना, रॉयल सोसाइटी की मैगज़ीन, उसका वो एडिटर जब बना ना क्रेमवेल, तो कहते हैं उसने ना ग्रे की सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स को ना पब्लिश करना शुरू कर दिया. एंड न्यूटन डिड नॉट बॉदर एंड डिड नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज ही हैड डाइड अ फ्यू ईयर्स अर्ली. और कहते हैं इन 1731 व्हाट हैपेंड वाज कि ही इज लाइक कि he gained fortune and he was like, this is victory and everything, but unfortunately he died a few months after. And on his deathbed he was like, if I get a few years more, I am thinking of a floating world. और वो float किसके ऊपर कर रहे होंगे? They would float on electrical forces. But on the next day he died, so that was kind of traumatizing. In 1731 he told that he wanted told the world about his success. Oh, मैंने
छोड़ दी लाइन, सॉरी, फिर इसके बाद वो मर जाता है. And what he discovered was he discovered conduction, insulation, and induction. So yeah, this was the amazing Stephen Gray, whose face we don't know about, and this was his success story, and this was how we know him till this day. His success was literally super amazing because it actually changed the course of history. इसके बाद कहते हैं induction के बाद बहुत सारे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं दैट लिंक बैक टू इंडक्शन एंड कहते हैं इलेक्ट्रिक मूविंग फोर्सेस विदाउट touching. So I think that's it for today's video, and I'm gonna see you in the next one. Till then, Allah Hafiz. Okay, bye bye.